नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। हम हैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। महाराष्ट्र में अब राजनीति में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हर कोई भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी शरद पवार जी ने अपील इशू करी अजीत दादा पवार और जयंत पाटिल साहब को कि भाई आपस में लड़िए मत, बड़ी कृपा होगी, एक दूसरे से हाथ मिलाइए, बेरी द हैचेट प्लीज, प्लीज डोंट फाइट विद ईच अदर। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, मुझे याद नहीं आता। मैं 1993 से मुंबई में हूं, 1993 से। आई केम हियर एज द एडिटर ऑफ द डेली, रिमेंबर द डेली, द न्यूज़पेपर विद द बुलडॉग ऑन इट। तब से आज तक मुझे याद नहीं आता कि आदरणीय सामान्य शरद पवार जी को कभी भी ऐसी अपील जारी करनी पड़ी हो कि अपने ही लोगों को कहना पड़े उनको पब्लिक में सरेआम जग जाहिर करते हुए कि भाई आपस में लड़िए मत। दिस इज अमेजिंग, व्हिच मीन्स द सिचुएशन इज रियली सीरियस। कहने का मतलब यह है कि गंभीर स्थिति है। इसके बावजूद क्या अजीत दादा पवार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, क्या स्टैंप पेपर पे लिख के दूं? इसका मतलब असल में नाराज थे या हैं। और टाइमिंग, जिस टाइमिंग पे जी, जयंत पाटिल उठता है भाषण के लिए और भाई साहब चले जाते हैं बाहर, और अजीत दादा पवार जी चले जाते हैं और सीधा फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाते हैं। और प्रफुल्ल पटेल साहब को कहना पड़ता है कि बाथरूम गए हैं। अरे कितनी देर तक बाथरूम गए भाई? क्या वो बाथरूम उड़ करके सीधा बाथरूम से ही उड़ करके सीधा मुंबई पहुंच गए? लेकिन फिर भी ये तो बात रही राष्ट्रवादी कांग्रेस की। लिहाजा इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है प्रदीप जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत दबाव में है। उनको मालूम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का असली निशाना राष्ट्रवादी कांग्रेस है। जैसा अमित शाह जी ने यहां पर आके कहा कि जिसने भी हमारे साथ धोखाधड़ी करी उसको हम छोड़ेंगे नहीं, यानी उसको सजा मिलेगी मिलेगी। और जो पार्टी धोखाधड़ी सह लेती है वो ज्यादा देर रहती नहीं है। उनका इशारा इस तरफ था, उद्धव ठाकरे जी की तरफ नहीं था। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी से तो वो निपट चुके हैं, उनकी पार्टी तोड़ दी, पर उनके 40 लोग इस तरफ ले आए। 54 में से 40 लोग जो हैं, 54 में से 40 इस तरफ आ गए, तो बचा क्या? शरद पवार जी को अब ऐसा लग रहा है कि निशाना उन पर है और आज उनको अपने सभी लोगों की खास जरूरत है। अब शरद पवार जी को शायद ये सोचना पड़ेगा कि इतने सालों में उनके खुद के जितने लोग थे उनके ऊपर से उन्होंने अपना हाथ कैसे हटाया। प्रदीप जी, आज भी हमारे परम मित्र अनिल देशमुख जी जेल में हैं। हमारे दूसरे मित्र, हम तो उनको मित्र ही मानते हैं। नवाब मलिक साहब हमें मित्र नहीं मानते, हम तो उनको मित्र मानते हैं। आज तक नवाब मलिक साहब भी जेल में हैं। उसके पहले छगन भुजबल साहब ना जाने कितनी देर तक कस्टडी में रहे, जेल में रहे, बेल पर बाहर हैं। ये सब लोग शरद पवार जी के लॉयलिस्ट थे, ऐसे थे शरद पवार जी के साथ। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो शरद पवार जी कहीं आसपास नहीं थे। ऐसा अनुमान हो सकता है बैकग्राउंड में हो सकता है बैक चैनल टॉक्स शरद पवार जी कर रहे हो सकता है, लेकिन सामने प्रतीत नहीं होता। और उसके बिल्कुल विपरीत आप देखिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को, जो दूसरी पार्टी से भी शख्स इस तरफ आता है उसके खिलाफ जो भी आरोप हों, जितने भी केस हों, भारतीय जनता पार्टी में आते ही अमित शाह जी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लिहाजा लॉयल्टी, it appears, is always rewarded in the BJP. भारतीय जनता पार्टी में लॉयल रहने का हमेशा पुरस्कार यानी इनाम मिलता ही मिलता है। जैसे प्रदीप जी,
देवेंद्र फडणवीस जी को खुद देख लीजिए। सबको अनुमान यही था, यहां तक कि हमें भी अनुमान यही था कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बार भी जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसे ही हुक्म हुआ आपको सरकार में जाना है और आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, यानी यू हैव टू जॉइन द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू बी द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मिस्टर शिंदे विल बी द चीफ मिनिस्टर। And Mr. Devendra Fadnavis did not hesitate even for a single minute. Like a true RSS soldier. RSS का जैसे जो भी कार्यकर्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी लॉयल कार्यकर्ता होता है, उसका उदाहरण उन्होंने सबके सामने रखा और कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद त्यागता हूं क्योंकि मेरी सेंट्रल लीडरशिप ने कहा है आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। याद रखें प्रदीप जी, बड़ी बहुत गंभीर बात है ये। देवेंद्र फडणवीस जी को अपनी पार्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ा कि क्यों मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरी बीजेपी भी तैयार थी कि सरकार हमारी होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा, एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। लेकिन आज भी देवेंद्र फडणवीस जी के मुंह पे जरा भी शिकन नहीं है। ही इज वर्किंग एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह। Pradeep ji. Exactly, sir. Today the Gram Panchayat elections are out, and BJP, it's already counting is going on, but BJP is emerging as a single largest party, and second is the Rashtrwadi Party. The biggest surprise is Eknath Sena moving ahead of the Shiv Sena. Yes. That is absolutely so. Which is going to be the original Sena is for people and the courts to decide. The courts are going to decide definitely. But जिस प्रकार से 15 में से 12 unit chief, state chiefs है उनका, they have left Uddhav Sena and joined Eknath Sena, making Devendra Fadnavis tell that देखो original Sena ये है, Eknath Sena, और फूटी सेनी है वो, that is a part of the group. प्रदीप जी, A break, 40 पंचायत इन्होंने जीते हैं। faction, yes, exactly. Sir. शिवसेना ने 37 जीते हैं। Yes. तो द मैसेज इज एक के बाद एक जिस प्रकार से क्लियर हो रहा है। बीजेपी इमर्जिंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी हैज अ गुड प्रेजेंस अमॉन्ग द रूरल एरियाज, तो दे हैव मैनेज्ड टू कीप देयर लेवल टू नंबर 2. So after that, it's all free for all. What is going to happen is ultimately, because BJP is in state, definitely most of the panchayats will come towards the BJP only, and it's going to be BJP ruled allied parties that control the entire panchayats all across the state. लेकिन यहाँ But एक छोटा सा स्पष्टीकरण, पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं वो पार्टी सिंबल पर नहीं होते। वहां पर इफेक्टिवली जो भी खड़ा होता है पंचायती राज चुनाव में वो अपने स्तर पर ही खड़ा होता है और ये बाद में तय होता है कि कौन किसकी पार्टी से। सिंपल बात है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आगे। प्रदीप जी, 188 पंचायत, 188 पंचायत have been won by the BJP. Yes. BJP is out as number one party. Even last time they were the number one party. Even now they are the number one party. And Rashtrwadi has to really work. Now the biggest threat is to Sharad Pawar's Rashtrwadi party. As you said, he pulled up both the top leaders, Ajit Pawar and Jayant Patil, brought them together and said no more fights and no more fights out in the open. Whatever he tries to do, Ajit Pawar seems to be a very, very aggressive kind of a person who doesn't want to. I mean, this Jayant Patil Ajit Pawar feud has been going on since a long time. And there was also a time when Ajit Pawar rebelled against Sharad Pawar. So he is a person waiting to, fight back, or he could be the greatest threat to Sharad Pawar and the NCP if his ways are not followed, if his ways are not given to. And ultimately, when the leader of the opposition, LOP, post was there, he put his foot down, and Sharad Pawar had to put Jayant Patil away and make Ajit Pawar the leader of the opposition. So that is the kind of clout that Ajit Pawar has within the party. Even Sharad Pawar actually accepts it. The other option is, second thing is what we happened was Raj Thackeray, जिस प्रकार से उनका जो नागपुर दौरा है लगातार, आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उन्होंने, and there also the target was Uddhav Thackeray.
he said that during his time, when he used to be in Matoshri, when Balasaheb Thackeray, Pramod Mahajan, Gopinath Munde, and all the people were there, he was a witness to all these meetings in which it was clear-cut decided that the party that has more seats will have the chief minister. That's right. And he said that was an unwritten rule. That was the rule. That was the rule that everybody followed it. How can Uddhav Thackeray come and suddenly say, and then he gives a point-by-point classification how it happened. He says, what happened within the closed doors? Nobody knows, but what happened outside, everybody knows. That's right. When Mr. Modi was telling in open meetings, and Uddhav Thackeray was there, that your chief minister is going to be Devendra Fadnavis. Amit Shah telling in open meeting, public rallies, where Uddhav Thackeray was there, in the presence of Uddhav Thackeray, telling him that Devendra Fadnavis is going to be the chief minister of the state once we win. Then he said, what happened? What happened after the elections? Suddenly you reminded the people that there was a closed door meeting back. If there was a closed door meeting back, why didn't you object then and there? Yes. That Mr. Modi, you have promised me that I am going to be the chief minister. Or there will be a Shiv Sena chief There will be minister. Shiv Sena chief minister. Gee. Or Mr. Amit Shah. Tell Mr. Amit Shah that, look, you had a closed door meeting with me in which you had promised that chief minister is going to be from the Shiv Sena. You can't backtrack. He said all these public rallies, Uddhav Thackeray kept quiet. And once the election was over, he said there was a closed door meeting. And the BJP has betrayed us. And it's time to change and have the alliance. He says the ideals of Balasaheb Thackeray. Who's following it? It's the Eknath Sena that is following it. Balasaheb Thackeray would never sit with the Congress and the NCP. Now what we are seeing is Uddhav Thackeray sitting with them. The whole thing is Raj Thackeray went on to talk even one step ahead when he said, why is the business going out of Maharashtra? That's a case of investigation. If there has been a call for money, if somebody has asked money, there has to be an inquiry. Yes. And he also told that how certain trades went to Tamil Nadu when it was actually poised to come in Maharashtra. And when our ministers and bureaucrats said that we can't give you this facility, we can't do this, acquisition of land is a long process. And he said immediately after the meeting, the person telephoned Tamil Nadu government and they gave all the things required, land acquisition, all presto, immediate. He said this is why business is going away from Maharashtra. Maharashtra is the most favorable area. But if you don't give in to the demands, even adjust to the demands, public companies have to come here. Yes. That's the only way development takes place. That's right. And if you don't allow development by giving them problems of solving the problems of logistics, solving the problems of electricity, solving the problems of water, these are the genuine issues which they want some solutions. And as a state cabinet, it's your responsibility to provide ease of business, that business can take place here. The Maharashtra, our state should be the most favorable destination for all business houses to establish the business here. That's why you're going to retain the #1 state position. Now, Raj Thackeray was absolutely, when once Raj Thackeray finished, then we had Ramdas Kadam. Ramdas Kadam, I think, दौरा था उनका रायगढ़ and Konkan areas, जिस प्रकार से कहा कि why do you want to remind everybody all the time that you are the son of Uddhav Thackeray? Of Balasaheb Thackeray. Yeah, sorry, you're the son of Balasaheb Thackeray. The second part is, you cannot mention we it. can't repeat it. We can't Only repeat it. Ramdas Kadam can say. Only Ramdas Kadam can say. Now these things, second is the Dasera Melawa, how it's going to happen. Shiv Sena has still not got the permission. Whereas Eknath Sena has got the permission in BKC. So BKC event is on and Eknath Shinde, which claims that they are original Sena, they are going to do it. One event is clear, the Dashera Milawa of Eknath Sena, which he says is the real Shiv Sena, will be conducted. They have given permissions and money has been paid for both the grounds, and that event is on. Tomorrow, Uddhav Thackeray group and their leaders are going to meet the BMC ward concerned. Now, this has stopped to this level. You have come to this level where senior leaders have to go and take permission and request for permission from the ward officer. From the ward officer. Yeah. How it's going to happen? How are you going to hold the Shiv Sena? Which is the real Shiv Sena? Now, after the Gram Panchayat elections, Eknath Sena has, within a short period of time,
establish what it's, कहाँ से ये कहाँ तक पहुँच गए, and it is actually reflecting the mood of the people also. And that too in the rural area. That too in the rural areas. The mood of the people in the rural areas are towards Eknath Shinde. Now, right now, Mr. Eknath Shinde Sena is racing ahead of Uddhav Thackeray Sena. But you don't know, during course of day it might change, but to give a competition, to have an early lead. It will change in the other way. In the other, it will change the other way most probably. But the people's response, the Shiv Sainik's response, the results coming out from the field gives a clear indication ki where is the real Sena, where is the real Sena. And whatever you call it, master planning by the BJP, betrayal by the BJP, Shiv Sena as Uddhav Sena as BJP says, and BJP believes that this party will never forget betrayals. How long, what more, even for the courts to arrive at a decision, if Eknath Shinde Sena gets more seats than Uddhav Sena, where is the indication? Now Devendra Fadnavis is saying that Eknath Sena is the real Sena. I don't know about other Sena. This is the Shiv Sena. And everybody. Now you see a combined effort. Raj Thackeray going there, Ramdas Kadam's utterances. You find that Uddhav Thackeray is losing momentum. Uddhav Thackeray is losing the ground that he had. Uddhav Thackeray is losing the ground that Balasaheb Thackeray had built over the years. It's just slipping away. And what's going to happen? This itself is a result. What is going to happen? The Dasera Mela never happens. I mean, what I'm saying, I hope it happens, because there has been a tradition of Balasaheb Thackeray, the legacy of Balasaheb Thackeray. Everybody, as Sharad Pawar said today, that Eknath Shinde can have his program, but Shivaji Park belongs to Balasaheb Thackeray. Balasaheb Thackeray's ideals and Uddhav Thackeray's Sena. Yes. Now, that itself, Sharad Pawar has a lot to think what is going to happen to his party. NCP seems to be in disarray. Ajit Pawar, controllable, not controllable. Jayant Pawar. But they've done well. They have done well. Supriya Sule. In the Panchayat elections, they've done well. Exceedingly well. Yes. But Rashtrawadi Party ne hamesha in the it's a Gram Panchayat, they have fared absolutely good, and they have good hold in the rural areas, wherever. It has not been now, it has been ages that Rashtrawadi Party has been performing exceedingly well. Now, with this Gram Panchayat, the next place, destination is the BMC elections. That's right. And the way things are moving, and with the speed that Eknath Shinde Sena is moving, now the target that he has given, Eknath Shinde has given to his leaders, that every leader whom I appoint is going to get me 10 corporators. Yes. Now, if that happens, what are we looking to? And we see the division in the Sena votes. Uddhav Thackeray, Raj Thackeray, you got Eknath Shinde Sena and Ashish Shilar, all eyeing that particular segment of vote. And the other vote, percentage of votes, or the Hindu votes, en masse coming to the BJP. That's right. North Indian and Hindu votes. Yes. It's very difficult what's going to happen. What are we seeing? What is the future? It's very clear what's going to happen, sir. It's absolutely clear what's going to happen. Is this BJP the end sweep of Uddhav Sena? And there are two, three things that, one is you inherit, as Eknath Shinde always says, you inherit property. You don't inherit ideology. And the fundamentals of Balasaheb Thackeray is the ideology that is preached. He said, we built that ideology. And we are carrying forward this ideology. ये ideology को हम बरकरार रख के इसको आगे बढ़ाने वाले हम लोग हैं. आपने property में आपका हक होता है. बालासाहेब ठाकरे के जितने property है वो आपका है. मगर ideology हमारा है. And the same sentiments has been echoed by Narayan Rane and all the old leaders of Balasaheb Thackeray, all the Balasaheb Thackeray and the Shiv Sena. They're all here, rank and file with the BJP. Time alone will tell how Uddhav is going to retain the little foothold that he has got in Mumbai. Absolutely difficult. Very, very, very difficult. However, but it's a wake-up call really, because as far as the BJP is concerned, BJP has raised ahead of everybody. Yes. आज की तारीख में पंचायत में पिछली बार भी बीजेपी आगे थी. उस वक्त ये बोल रहे थे वन ऑफ चीज़ है, कभी कभी हो जाता है. उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी आगे थी, तब भी एक आ गया था, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा ये सब कुछ. लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल साफ हो गया है दैट द भारतीय जनता पार्टी हैज़ एस्टैब्लिश्ड इट्स होल्ड ओवर रूरल महाराष्ट्र एज वेल. और दोनों अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो गई है. इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यह हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी की इमेज की वजह से आज की तारीख में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को हराना या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से वंचित रखना बिल्कुल नामुमकिन है. एंड आई से इट ओवर हियर अगेन, द बीजेपी एकनाथ शिंदे सेना विल स्वीप द बीएमसी इलेक्शंस. याद रखें, 150 से 180 सीट कहीं नहीं गई. इट्स गोइंग टू हैपन. एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट right here first, right here on Nation Now. That's it. That's all we've got for you in tonight's Nation Now from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी.